My dear students, welcome back to my channel and congratulations for having in your new class. You have passed your previous class and now you are in 7th standard. So a big congratulations to each and everyone. We are going to start our book. The name of the book is My English Companion. This is your English literature book. And this book is having some chapters and some poems also. Very small but very interesting chapters. So today we are going to do the chapter. This is Rent for Water. It's interesting chapter. So let's get started. Once upon a time, a man sold his well to the farmer. Before starting the chapter, I would like to tell you the meaning of the title. Rent for water. Rent पता है बच्चे क्या होता है? किराया, है ना? हम जब कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उसको रेंट पे ले लेते हैं ताकि हम लोग उसका थोड़ा सा अमाउंट पे करके हम उस चीज़ को एंजॉय कर सकें. तो हियर इट्स अ रेंट फॉर वाटर. पानी को किराए पर, ऐसे उसका क्या किराया है पानी का ना, उसके लिए है. वंस अपॉन अ टाइम द मैन सोल्ड हिज वेल टू द फार्मर. एक समय की बात है कि जो फार्मर था उसने ही सोल्ड, एक आदमी था उसने अपना जो वेल था वो एक फार्मर को सेल कर दिया. द फार्मर बॉट द वेल सो दैट ही कुड वाटर हिज फील्ड. You know, farmers need water for the agriculture. So he bought that well so that he could give water to his fields. The next day when the farmer went to draw water from the well, the man did not allow him to draw the water from it. And now what happened next day when the man he went to the fields, he went near the well to draw out the water so that he could water his fields. तो उस आदमी ने उसको अलाउ नहीं किया कि तुम पानी जो है वो वहां से निकाल सको. He said, I have sold you the well, not the water, and you cannot draw the water from it. कहता मैंने तुम्हें सिर्फ well sold किया है, सेल किया है, उसका पानी नहीं. ठीक है, so इसलिए तुम उसका पानी नहीं निकाल सकते. They started arguing. Now they started having that hot discussion. When they could not solve the problem, they decided to take the issue to the king. They went to the court of the king Krishnadev Rai. Now, when no settlement was done, they went to king's court. And at that time, King Krishnadev Rai was the king of that time. So he went to the court of that king. उसकी court में गए, उसकी अदालत में वो गए. King Krishnadev Rai was sitting in his courtroom. And he was listening the complaints of the people of his kingdom. The man and the farmer came inside the courtroom of the king and greeted the king by joining their hands and bowing in front of them. Now both of them, they went to the court of the king and they wished him accordingly. They bowed their head and said, Your Majesty, and then they started their problem. The farmer looked very sad. Now, farmer was sad because he was not allowed to take out the water from the well. वो उसको पानी वहां से निकालने की इजाजत नहीं थी, तो वो बहुत परेशान था. King Krishnadev Rai asked him, "Why are you looking so sad? What's your problem? तुम इतने sad क्यों हो? तुम्हारी क्या problem है?" The farmer narrated everything to the king, and he said in sad voice, "Your Majesty, I am a poor farmer. It is difficult for me to get 2 meals every day." उसने कहा कि सर मैं बहुत ही पुअर हूँ, किंग मैं बहुत ही पुअर हूँ और मुश्किल से 2 meals डे मीन्स कि एक दिन का 2 वक्त का खाना भी मेरे लिए अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. प्लीज हेल्प मी. द किंग सेड, ऑल राइट, टेल मी योर प्रॉब्लम. उसने कहा कोई बात नहीं, यू जस्ट टेल मी योर प्रॉब्लम. व्हाट्स द मैटर विद यू? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? द फार्मर रिप्लाइड मैंने होता है जवाब देना, आंसर करना. ही रिप्लाइड, The man is my neighbor. This man, ये जो मेरे साथ आया है, ये मेरा पड़ोसी है. And I needed water for my fields. I bought a well from him to water my fields. So he was having a well. So I bought it from him so that I may water my fields. इसके पास एक कुआं था, तो मैंने उसको खरीद लिया ताकि मैं अपने खेतों को उस पर पानी अच्छे से दे सकूं. The king said, Did you not pay him the money? क्या तुमने उसको पैसे नहीं दिए? उसके पैसे जो आपने खरीदा है तो उसका अमाउंट तुमने इसको नहीं दिया. द फार्मर सेड, आई डिड, योर मैजेस्टी, विद ग्रेट डिफिकल्टी आई हैड कलेक्टेड मनी टू बाय द वेल. कहता मैंने दिया, इसके पैसे दिए मैंने और बहुत मुश्किल से दिए क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मैंने कुआं खरीदने के लिए उसके पैसे इसको दिए.
I bought the well from him by giving money he had asked for. जितनी भी मनी इसने बोली मैंने उतनी ही दी. The king asked the man, did the farmer give you the money for the well? Now the king asked that man, did you got the money? क्या तुम्हें उसके पैसे मिले? Did you get that money? तुम्हें उसके पैसे मिले? The man said, yes, your majesty. हाँ बिल्कुल मिले. The king asked the farmer, so what's the argument about them? कहता if you sell that well and you got the money and the farmer he bought that well and he gave you the money, then what's the problem? The farmer said, now he is asking me to pay the money for the water too. तो फार्मर कहता है कि सर लेकिन बात पता क्या है, मैंने तो कुआं खरीद लिया और ये कह रहा है कि मैंने पानी तुम्हें नहीं बेचा है इसका, तो उसका पैसे मुझे अलग से चाहिए. The water in the well is mine now. Why should I pay him more? I want justice, your majesty. कहता सर जब मैंने कुआं खरीद ही लिया है तो उसके जो अंदर का जो पानी है वो भी अब मेरा है, तो मैं उसके लिए कुछ को अलग से पैसे क्यों दूं? कृपया मुझे न्याय दीजिए. Give me justice, your majesty. The king asked the neighbor, what's this is true? उसने पूछा कि ये क्या है, क्या ये सही बात है? The neighbor also pleaded, yes, your majesty, I sold him the well, but not the water inside. कहते yes sir, मैंने इसको कुआं तो बेच दिया, but not the water. I sold him only the well. The king found the problem very interesting and asked Tenali Ram, the wisest minister of the court, to solve it. उसको ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी, केस थोड़ा डिफरेंट सा लगा ना. जैसे आप सोचो कि you have bought a car and but the steering and the seats and the wheels are not sold then, right? So in the similar way, well is sold but the water is not sold. So he called his the wisest minister Tenali Rama. Tenali Rama was considered to be the wisest man in the court of Raja Krishna Dev. Tenali Ram said to the neighbor, we understand that you sold your well to the farmer but not the water. Yes sir, said the man. Then he again asked the same thing from that man. But you sold the well, took the money for it. कहते and you sold and you took the money. तूने उसको बेच दिया और मनी भी ले ली. Said Tenali Rama, yes sir. उसने कहा हाँ बिल्कुल, मनी भी ली और उसको मैंने सेल भी किया. The wise minister looked at the farmer and said, so the well belongs to you and the water to your neighbor. कहते ठीक है, अब ये जो वेल है ये इस आदमी का है, फार्मर का है, और उसके पानी जो है वो अंदर का वो तुम्हारा है. कहते यस. सो शी इज यस सर. सो इज ही गिविंग यू द रेंट फॉर कीपिंग हिज वाटर इन योर वेल? आस्क्ड तेनाली रामा. अब तेनाली रामा ने फार्मर से पूछा, ठीक है वेल तुम्हारा है, पानी इसका है, तो आप अपने कुएं में उसका पानी रख रहे हो, तो क्या ये आपको इसका रेंट दे रहा है, इसका किराया दे रहा है? नो सर. उसने कहा नहीं सर, नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा. सेड द फार्मर स्माइलिंगली. उसको थोड़ा अच्छा लगा कि मेरे फेवर में बात होने वाली है. ही हैड अंडरस्टूड दैट ही वुड गेट जस्टिस. उसको अब लगा कि मुझे जस्टिस मिल जाएगा. Tenali Ram said to man, since you have kept your water in the well, you should pay the rent of farmer or take out your water immediately. कहता ठीक है जी ठीक है. उसने उस मैन को पूछा, वो जो क्लेवर मैन था, उसका कहा ठीक है तूने अपना पानी इसमें वेल में रखा है ना, जा तो उस पानी को निकाल लो या फिर उसका रेंट दो. इट्स रियली द थिंग ऑफ जस्टिस, इजंट इट? If you don't take out your water from the man's well, you must pay 2 gold coins as a rent to the farmer or keeping your water in farmer's well. कहता जा तो पानी निकालो, नहीं तो 2 gold coins तुम्हें as a rent देने ही पड़ेंगे. And a farmer will pay you 1 gold coin every month for drawing the water from the well for his field. और कहते तुम इसको 2 coins दोगे as a rent, और उसमें से पानी निकालने का जो होगा किराया, रेंट होगा, वो होगा 1 गोल्ड कॉइन, वो आपको फार्मर देगा हर मंथ. Krishnadev Rai started smiling at how Tenali Rama had solved the tricky situation and done justice too. Now that king, he became very happy that once again this minister Tenali Rama, he again changed the situation in a very tricky way, in a very nice way. So Tenali Rama proved that the greed is not good and punished the neighbor for his dishonesty. उसने कहा
कि ये तेनालीरामा ने जो सिचुएशन को सॉल्व किया तो किंग को बहुत अच्छा लगा कि इतनी मुश्किल वाली सिचुएशन को इतने आराम से तेनालीरामा ने सॉल्यूशन उसका निकाल दिया। अब एक बार फिर से तेनालीरामा ही प्रूव्ड दैट ग्रीड इज नॉट गुड, लालच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड ही पनिश द नेबर फॉर हिज डिसऑनेस्टी, एंड दैट नेबर, दैट मैन हु सोल्ड द वेल, he was punished for his dishonesty. So I hope you have enjoyed and understood the chapter. So my dear students, you are new to my channel, so please subscribe my channel and share it with the others, and hit the bell icon also, so that you may get the latest information for my new videos related to your chapters. Till then, it's a time to say bye bye.